Shanti, Shanti. With those auspicious words setting the tone for this beautiful occasion, let us now take a moment to understand the vision and the spirit behind Disha Bharat. Disha Bharat is a not for profit organization that has been shaping young minds since 2005 through value based personality development programs centered on know yourself, know your country, and know your culture. It empowers students to become responsible citizens and nation builders. My Bharat National Youth Campaign is nationwide initiative Disha Bharat dedicated to awakening patriotism, nurturing responsible citizenship and inspiring young Indians to become active contributors to the nation's future. One event under My Bharat campaign is the student activity, in which the students across India join online and share their knowledge and inspiring words with us. And now, as we move forward, it is time to turn our attention to one of the young revolutionaries who became a symbol of courage and sacrifice in India's freedom struggle, Khudiram Bose. To take us through his inspiring journey and contribution to our nation, we have with us Ms. Chetana M. Kulal from Canara College, Mangaluru. Over to you, Chetana. Thank you for introducing me. Good morning, everyone. Today I'm here to speak one of the bravest and youngest revolutionaries of our freedom struggle, Khudiram Bose. Khudiram Bose was born on 3rd December 1889 in Midnapur of Habibpur in Bengal, which is now also called as West Bengal. He was the very youngest revolutionaries of the to be executed by the British rule at the age of 18. When I first started reading about Khudiram Bose, the one thing surprised me was he was not like other freedom fighters. He was the one who he was a very young, where others thought about their career, about their life, about their studies. He dedicated he chose to dedicate his life for the nation to become in free. He was when I then I realized that uh, courage has nothing to do with the age. It all comes with the love for our nation and the willingness to do what is right. His parents were the Tilokanath Bose and Lakshmi Priya Devi, who lost their life when Khudiram was very young, and he was brought up by his elder sister Aparupa Devi. He was an ordinary Bengali student who at the beginning, but when he grew up, he realized that British gave bitterness to the Indians very harshly, and he was something different. He was affected by the stories of Indian operations and the nationalist movements. Then he got the interest on that. As a teenager, he joined nationalist movements like Jugantar and and then in 1905, there was a partition of Bengal where Indians, it was a point for everything, where everyone realized that uh, British rule tried to divide the Bengal and strengthen their empire. So they started revolutionaries. They started joining nationalist movements also, and then even in the records of Indian government accounts, Khudiram was he joined revolutionary at the age of 15 for Samiti. At the age of 15, he started thinking about his story is very extra political experience or political background. He was the teenager like us.
The nationalist movement at that time believed that freedom was achieved political mobilization, public movements, and constitutional methods. And some other leaders believed that British repression required revolutionary resistance. And he became involved in revolutionary group, nationalist and activities also. Became increasingly intense, and in his midterm, he decided or he committed his life for the India's independence. Next, the important chapter comes about Douglas Kingsford. Douglas Kingsford is a British magistrate who was targeted by the revolutionaries' anger. And he gained reputation through giving the harsh treatment for the Indian revolutionaries or the nationalist activities or nationalists who were working for the freedom. He was giving the harsh treatment for them. So the revolutionary movement decided to attack him. Where earlier it was already a team who decided to attack him. There was explosive devices to kill him, to attack him. There was many plan made, but somehow he survived from that. Subsequently, he was transferred from Calcutta to Muzaffarpur, uh, Muzaffarpur for eventually for his safety. Revolutionaries got this information about this, and they chose two revolutionaries, they were also young revolutionaries. They were Khudiram Bose and Prafula Chaki. These two went for Muzaffarpur by listening that by getting the information about King's Forward coming from getting transferred from Calcutta to Muzaffarpur. So they traveled there and started identifying him, observing his movements, what are the plans they were doing. They started they started identifying them, and then later they one day they planned to attack him. The day they planned, there was a carriage moving, going from one place to another, where they got to know that in one carriage there was Kingsford. 30th April 1908. But when this attack, it was it was unfortunately they mistakenly they attacked the another carriage. There inside there was two British women who of who is the family of lawyer Pringle Kennedy, where they lost their life. He realizes that they did not kill the officer, but they killed many innocent people in that. So they had to complete that mission. So they had to escape from that. So they escaped and they both got separated. Where Prafula Chaki went one side and Khudiram went for the countryside. He, they escaped and Khudiram reached Vaini railway station. It was a long journey for him and he got exhausted. By observing him, the police observed him and he got suspicious about him. So they started asking for Khudiram, where they got doubt and they arrested. Also got arrested, but and they will kill him or they will give a death sentence. He did not wanted to go with them. He killed his life himself. So he lost his life himself. So that doesn't wanted to kill by them. So next, so by that meanwhile the Khudiram was arrested. Next comes the now it was a very important part about trial. Uh, the trial began on 21st May 1908. The attack was done on 30th April 1908. After so many days, they found him, they arrested him, and the trial began on 21st May 1908.
They charged him for the Muzaffar bombing. It was a very important. It was a very important or the main point they took for trial, and many lawyers came to defend him as he was very young. Lawyers like Kalidas Basu and Upendranath Sen, and many other lawyers came later to defend him because he was just 18, and they did not wanted to they didn't wanted him to suffer. So he was very young to face the Revolutionary Act at the age of 18. Then later the death sentence was given. So when uh, Khudiram was informed about his death sentence, he smiled, and in his face it was extraordinary composure in his face. He was very cheerful, like other in our generation we don't want to die for the anything. So he was at the age of 18. It was very impressive that he didn't fight, like he did not get scared or something like that. He smiled at the smile in his face, thought gave a thought for a lawyer to take back death sentence and give him a proper life. But the execution was confirmed, and date was also given. They tried, but they couldn't make it because the execution was confirmed on the date 11th August 1908. Next morning, 11th August, he was taken for the Muzaffar gallows. He went with that that smile. He didn't leave his smile at the till the end. He came for the revolution. He entered the freedom struggle as a teenager and died taking and died through the died one of the as one of the youngest revolutionaries to will be remembered further till a lifetime. And according to government India's cultural records, identify him as a youngest martyrs of India's independence. After death, there was what happened after the death was there was an impact on the national. There was a powerful impact on a nationalist movement, symbol of youth, courage, and dedication and patriotism. He was an extraordinary person for the India, and the dedication, the courage he had, the India's for the Muzaffar attacking innocent people, where it was an one sad moment, but everything was perfect in the end. There is something very meaningful about the date on which I am standing before you. Is today is 11th August 2026, and it's a day on this day in 1908 the young freedom fighter named Khudiram Bose gave his life for the dream of his dream of freedom India, of the freedom of the India or free India. So as I conclude, as I ask I stand here as an Indian, ask myself the questions that India is free today, but what is the responsibility towards the freedom we are making? They fought for the nation. They fought and gave us the freedom. Our generation has to make sure that India is stronger. We have to make, as a youth, we have to make our India's more stronger. They made free nation, and we have to build a nation. We don't want to remember Khudiram Bose only as a youngest revolutionary or youngest freedom fighter, but we want to remember every Indian that the country has given you the freedom. Now it's our turn to give something in back to the country. We have to be responsible for what actions we are doing. And patriotism is not only about who you remember who gave you the freedom.
Patriotism is about asking ourselves what are we doing with the freedom India, what they sacrificed for. The freedom fighters who sacrificed for us, are we respecting them? Are we giving, are we doing the correct thing after that? So, at the end, Khudiram gave his tomorrow for us. And as the youth of India, let us promise ourselves we will learn, we will serve, we will contribute, and we will build a stronger country, because my Bharat is not just about my pride, my Bharat is my responsibility. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Chetna. Our next speaker is Ms. Zora Tasneem Mahaldar from AGM, BBA, and BCA College, Varur, Hubli, who will be speaking on the topic Young India, a new age entrepreneur. Over to you, Zora. Thank you for introducing me. ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और सुप्रभात। सबसे पहले दिशा भारत के सभी सम्मानित आयोजकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस ऑनलाइन मंच के द्वारा देश भर के युवाओं को अपने विचार को व्यक्त करने का अवसर दिया है। और मैं अपने प्रधानाध्यापक श्रीमती श्वेता कौंडनवर का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे दिशा भारत की ओर प्रेरित किया। आज मुझे यंग इंडिया, अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर जैसे प्रेरणादायक विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है। यंग इंडिया, अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर यह केवल एक विषय नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की कहानी है। कहा जाता है कि किसी देश की ताकत देखनी हो, किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी शहर की या फिर किसी राष्ट्र की ताकत देखनी हो, तो उसके सेना को नहीं, बल्कि उस राष्ट्र, उस देश के युवा के सपनों को देखिए, जो एक दिन इतिहास लिख सकते हैं और एक दिन उस राष्ट्र की पहचान बन सकते हैं। आज भारत तेजी से बदल रहा है। पहले केवल नौकरी पाना सफलता की पहचान माना जाता था, लेकिन आज का युवा केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है। यही है नया भारत और यही है युवा भारत। दोस्तों, आज का युवा नौकरी देने वाला तो बनना चाहता है, लेकिन वह तकनीक का इस रीति से उपयोग कर रहा है, उस तकनीक को उपयोग करते करते वह देश की उन्नति को छू रहा है। तो आइए अब हम उद्यमिता का अर्थ क्या है समझते हैं। तो पहले मैं कहना चाहती हूँ, जिसके इरादे ऊंचे होते हैं, जिसके इरादे ऊंचे होते हैं, उनके लिए मंजिलें कभी दूर नहीं होती। जिसके इरादे ऊंचे होते हैं, उनके लिए मंजिलें कभी दूर नहीं होती, क्योंकि सपनों को सच करने वाले लोग रास्ते ढूंढते नहीं, रास्ते बनाते हैं। तो उद्यमिता क्या केवल व्यवसाय शुरू करना है? क्या उद्यमिता केवल एक व्यवसाय में पैसे लगाना है? क्या उद्यमिता केवल एक बिजनेस को स्टार्ट देना है? तो फिर कहे नहीं। उद्यमिता का अर्थ यह है अपने व्यवसाय को एक समाज के लिए भी मदद होनी हो, ऐसा शुरू करना है। उद्यमिता का अर्थ समस्याओं का समाधान खोजना है। उद्यमिता का अर्थ नए विचारों को वास्तविकता में बदलना है। और उद्यमिता का अर्थ है समाज के लिए कुछ उपयोगी बनाना। यही है असली उद्यमिता का अर्थ। एक सच्चा उद्यमी वही है जो मेहनत से काम करे, जो परिश्रम से फल लाए और
समाज और राष्ट्र के लिए कुछ उपयोगी बनाए। आज का भारत स्टार्टअप्स का भारत बन चुका है। जैसे कि आप सब लोग भी जानते होंगे, आज कई लोग स्टार्टअप्स में काम करने लगे हैं। तो स्टार्टअप्स जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन जैसी पहल ने देश के करोड़ों युवाओं को अपने सपनों को सच करने का, अपने सपनों को साकार करने का मंच दिया है, अपने सपनों को सच करने का अवसर दिया है। हमारी हमारी युवा हमारी ताकत है। भारत युवा भारत की ताकत। भारत सबसे युवा देशों में से एक है। दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो एक दिन ये सपने इतिहास रच सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आज के युवा आज के युवा तब तक ना रुकेंगे जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उद्यमिता के लिए उद्यमी एक सच्चा और उद्यमी बनने के लिए कुछ विशेषताएं हैं। जैसे सच्चे उद्यमी की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बड़े सपने देखता है, जोखिम लेने से नहीं डरता, लगातार सीखता रहता है, मेहनत करता है और समाज एवं देश के लिए कुछ देने का हमेशा सोचता रहता है। यही सच्चे उद्यमी की विशेषताएं हैं। जब हम एक उद्यमी बन रहे हैं तब हमारे रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं, कई चुनौतियां आती हैं, कई मुश्किलें आती हैं। तो एक सच्चा और एक अच्छा उद्यमी बनने के लिए आर्थिक कठिनाइयां भी आती हैं, प्रतिस्पर्धा भी आती है, अनुभव की कमी भी आती है, असफलता का डर भी आता है। तो आर्थिक कठिनाइयों में जब हम कुछ नया कर रहे हैं तो हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं रहते, आर्थिक कठिनाइयां आती हैं। और अनुभव की कमी, अगर एक युवा या फिर युवती, एक युवक और या फिर युवती कुछ नया सीख रही है तो उनके पास अनुभव नहीं रहता, तो वह नए अपने बेसिक या फिर फाउंडेशन से वो सीख रहे होते हैं। और असफलता का डर, यह इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। एक सफलता पाने के लिए असफलता मिलना जरूरी है। अगर आपको सफल उद्यमी बनना है या फिर अगर आपको एक सफल कुछ ना कुछ करना है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, तो असफलता आनी जरूरी है। बगैर असफलता के सफलता कभी प्राप्त नहीं होती। और हर युवक, हर युवती जो भी उद्यमी बने, जो भी एंटरप्रेन्योर बने, उन्हें असफलता का डर अपने मन से निकाल देना चाहिए। तो असफलता कभी अंत नहीं होती, असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की शुरुआत होती है। जबकि उद्यमी बनने के लिए कोई युवक या फिर युवती शुरुआत करे तो वो ये जरूरी है कि वो एक ना एक बार गिरे जरूर। तो गिरना कभी कमजोरी नहीं माना जाता। आज तक गिरना कभी कमजोरी नहीं माना जाता, बल्कि गिरकर फिर उठना ही असली जीत होती है। गिरकर फिर उठना ही असली जीत होती है। सच्चा उद्यमी वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस राष्ट्र और समाज के लिए भी सोचे, इस राष्ट्र और समाज के लिए भी कुछ उपयोगी बनाए। सफल उद्यमी वही है जो लगातार काम करे, जो लगातार मेहनत करे, बल्कि हर दिन नए नए छोटे छोटे प्रयासों का वह अपने दिननित्य में लाए। सफल उद्यमी बनने के लिए कुछ 5 मंत्र हैं। बड़ा सोचें, लगातार सीखते रहें, समय का सही उपयोग करें, मेहनत और ईमानदारी को अपना आधार बनाएं,
कभी हार ना माने। अपना समय बर्बाद ना करें और कभी हार ना माने। अगर सफलता ना मिले, असफलता मिली, तो भी कभी हार ना माने। अपने समय का सही उपयोग करें। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखें और हर दिन नई चीजें सीखते रहें। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, स्वामी विवेकानंद जी की कहावत है युवाओं के लिए। अक्सर हम 11 जनवरी को देश भर में इंडियाज यूथ डे मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, खास करके युवाओं के लिए, उठो, जागो, तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि हम रोज अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करें, मेहनत करें, बिना अपना समय बर्बाद करें, तो हर हर इस देश के युवा अपने भारत देश को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाते हैं। यदि भारत देश के युवा सबसे बड़ी ताकत है उस देश की, तो अगर वो रोजाना काम करें, बिना अपना समय बर्बाद करें, बिना असफलता के डर से रोजाना काम करेंगे, तो वह भारत को हर उस शक्ति, हाँ, आर्थिक शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना सकते हैं। और आज का भारत अवसरों का भारत है। हमारे पास कई सारे अवसर हैं, लेकिन ऐसा है कि हम लोग उसे उपयोग करना नहीं चाहते। तो आज का भारत तकनीक का भी भारत है। युवा के पास कई सारे तकनीकें हैं, जैसे इंटरनेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया। ये सभी तकनीकों ने, और भी कई सारे हैं, ये सभी तकनीकों ने उद्यमिता की परिभाषा ही बदल दी है और व्यवसाय की परिभाषा ही बदल दी है। एक युवा घर बैठे अपने मोबाइल फोन के द्वारा व्यवसाय कर सकता है। एक युवा घर बैठे अपने मोबाइल फोन के द्वारा कुछ नया सीख सकता है। एक युवा घर बैठे अपने मोबाइल फोन के द्वारा कुछ कर सकता है। यही है नया भारत, और इसे हम डिजिटल इंडिया भी कह सकते हैं। तो आज का भारत अवसरों का भारत बन चुका है। हमारे पास कई सारे अवसर हैं। जैसे हमारे पास करोड़ों युवा मौजूद हैं, और इंटरनेट क्रांति है, डिजिटल क्रांति है, स्टार्टअप संस्कृति है, मेहनत करने वाले युवा हैं, और सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बड़े सपने देखने वाले और उन सपनों को सच करने वाले करोड़ों युवा इस भारत देश के निवासी हैं। इससे ज्यादा बड़ा अवसर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा बड़ा अवसर हमें मिल चुका है। तो आज एक गांव का छोटा छात्र, एक गांव का छोटा युवा, एक गांव की छोटी छात्रा, छोटी युवती, कोई भी हो, कोई भी, कितनी भी गरीब हो क्यों ना हो, वह अपने एक छोटे से मोबाइल फोन के द्वारा, अपने एक एंड्रॉइड फोन के द्वारा अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अपने जीवन को कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और ऐसे ही चलते 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 वह एक दिन इस राष्ट्र और इस समाज को कुछ न कुछ दे सकते हैं। और यही है नया भारत, और यही है डिजिटल इंडिया। तो आइए हम सब मिलकर इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का प्रयास कभी ना छोड़ें। तो आइए हम सब मिलकर यह कहें कि हम लोग भारत को इस तरह बदलेंगे जिस तरह वह अब 2026 में है, उसी तरह वो 2047 में नहीं होगा। यानी विकसित भारत वह अपना गोल जो है वो छू कर ही रहेगा। आइए हम इसी आशा और उम्मीद के साथ कहेंगे कि हम अपना भारत बदलेंगे। और जो भी मैंने बताया, यहाँ इस देश का युवा डरता नहीं है, इस देश का युवा असफलता से डरता नहीं, और इस देश का युवा लगातार मेहनत करता है बिना समय को बर्बाद किए। और
और इस देश का युवा हमेशा कुछ नया सीखता रहता है और जोखिम लेने से नहीं डरता। यही सब है इस देश के नए युग के युवा की, नए युग के उद्यमी की, नए युग के युवा की विशेषताएं। एक, तो आइए आप और हम सब मिलकर हमारे भारत को बदलेंगे, और आप और हम सब मिलकर हमारे भारत को दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। यही है नया भारत और यही है नए युग का उद्यमी। और जब युवा बदलेगा, जब युवा के सपने बदलेंगे, जब युवा बदलेगा, तब राष्ट्र बदलेगा, यानी हमारा भारत देश बदलेगा। जब भारत देश बदलेगा तो याद रखिए हमारी दुनिया जरूर बदलेगी। कुछ पंक्तियां हैं एक पद्य की, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कुछ है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। फिर ऐसा है कि वह एक बार दाना लेकर, आप लोगों ने देखा होगा, एक बार वह दाना लेकर चढ़ती रहती है दीवार पर, तो एक बार चढ़ने से वह ऊपर अपने लक्ष्य तक नहीं जा सकती, तो वह 100 बार फिसलती रहती है, फिसलती रहती है, और फिर वह अपने उस लक्ष्य पर तक जाने, उस लक्ष्य तक जाने का उसने नहीं छोड़ा, वह हमेशा कोशिश करती रहती है। इसी तरह मेहनत की नौका बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम भी युवा हैं, हम भी इस देश हम भी इस देश का हम भी इस देश के सपनों को सच कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग कभी कोशिश करने से हार नहीं माने। जितने बार हमें असफलता मिलती है, उतने ही बार हमें सफलता की मंजिल तक जाने के लिए हमेशा हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और यही बताता है कि यही है नए युग का उद्यमी, और यही है नए युग का युवा, और यही है नए युग की युवती। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Zora. And now, after hearing from our wonderful speakers and gaining insights into both our nation's history and the entrepreneurial spirit of young India, it's time to look ahead at what Disha Bharat has in store for all of us. We have an inspiring evening lined up for you today as a part of My Bharat campaign lecture series. We are honored to have Dr. S. Somanath with us, who will be speaking on the fascinating topic Space and Technology Bharat's Global Footprints. It promises to be an insightful session and takes us beyond the skies and into India's remarkable journey in space and technology. And as we step into the morning of 12th August, that is tomorrow, we have another exciting session lined up, our student talks, where young minds take the stage to share stories, ideas, and perspectives that inspire us. And that's not all. As a part of the Disha Bharat celebrations commemorating the 80th year of India's independence, we are delighted to present the My Bharat intercollegiate competitions scheduled on 12th August at 9:30 a.m. at the MES Institute of Management, Bengaluru. These competitions are designed to celebrate the spirit, creativity, culture, and innovation of young India. The events include Bharata Darshani mobile photography competition, Bharata Swaranjali group singing competition with instruments, Bharata Nritya Sanghama group dance competition, Bharata Innovation Challenge startup pitch. We warmly invite students from colleges across the region to participate, showcase their talents, and be a part of this grand celebration of India's heritage, creativity, and innovation. Registration is open till 11th August, and attractive cash prizes, participation certificates, and many exciting opportunities await all the students. We look forward to your enthusiastic participation. And as we come
to the end of this wonderful and enriching session. Thank you all for being a part of today's My Bharat Student Talk. Our heartfelt gratitude to our speakers for their inspiring presentations, to our mentors and volunteers for their guidance, and our technical team for ensuring a seamless live stream. A special thanks to all our viewers for your encouragement and support. Let us continue to learn, serve, and contribute towards building a stronger Bharat. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः